Ya Limadat sir, Ya Limadat friends online. याली याली मदद मदद तमाम साथियों को याली मदद लाली मदद मुलाली मदद। आमीन। बहुत खूब। अल्लाह मौलाना अली, अल्लाह मौलाना अली. That is the tasbih and the call of a mu'min in the time of Qiyamah. As per Imam of the time of Qiyamah's Farman, that Ali, Allah is correct, and that is the call of the time of the Mu'mineen of the Qiyamah. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Maulana Ali. Ali Zaman, Nur Maulana Shah, Karimul Sani, Hazir Imam, Hazir Imam, Hazir Imam. Ya Maula, Tawfiq, Taid, Himmat wa Yari Maula. Ya Ali Zaman, Nur Maulana Shah, Karimul Sani, Hazir Imam, Hazir Imam. Madad Farma, Al-Hayyul Qayyum, Ali Allah, Madad Farma. या मौला मेहरबान, हम गरीबों को मदद फरमा ताकि हम कुछ इल्मी काम कर सके, इल्म की कुछ बातें कर सके और इसको समझते हुए तेरे हकीकी तरीके को, तेरे हकीकी जामे को, तेरे नूर को पहचान सके. मौला मदद, मौला मदद, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला. Today we will come to our last and the 8th session of importance of ilm in understanding our tariqa. आज ये हमारा आखिरी और 8वां सेशन होगा हमारे तरीके की समझ के लिए. इल्म की अहमियत, ये इल्म ही है जो हमें हमारे मजहब की हकीकी समझ देता है. It is the true knowledge of the Imam which could give us the understanding of our tariqa. Which understanding of our tariqa? Which understanding of our tariqa? Because what is zahir, what we do physically, matter of fact, we don't need anything. Because we can see our parents have taught us and we practice that every single day. When you had never heard of Nachiz and Garib, when there was no Zoom online classes, when we simply were living our life, inshallah, going to Jamaat Khana morning and evening, and we were doing all the kriya that we do today. 2 साल पहले शायद हमने ऐसे सेशंस जो आज हम चलाते हैं उसका शायद नाम भी नहीं सुना था, नाचीज का भी नाम नहीं सुना था, और हम आराम से अपने मजहब को पाल रहे थे. तो सवाल है अपने आप से कि क्यों आज हमको इल्म की जरूरत पड़ी
हमारे मजहब को समझने के लिए। हमारा वो तरीका जो हम जाहिर के अंदर निभाते हैं, the तरीका which we practice physically does not require you to give your time, nor we need all these classes, because we have been doing that for many years. We have watched our parents do it and we have championed it. Matter of fact, we are doing it so well that most of the time we are not even paying attention to it. I want to repeat this part again in Urdu and then back to English again. हम जो क्रिया करते हैं रोजाना, वो हमने इतनी अच्छी तरह से सीख ली है क्योंकि हमने सालों साल तक उसको किया है और हमने अपने माँ बाप को भी करते हुए देखा है और हमने उसको चैंपियन कर लिया है। इतना चैंपियन कर लिया है कि हम कोई तवज्जो दिए बिगर हमारी क्रिया कर सकते हैं, without giving a second thought, without giving any attention, without having any intention, किसी नियत, किसी एफर्ट के बगैर हम ये काम करते हैं। इतना कि हमारी तवज्जो ही खत्म हो गई है उसकी तरफ से। हम एक मैकेनिकली, ऑटोमेटिकली we just play without having any effort, any second thought, even any niyat. We just do it. We have championed it. Am I right in saying this? क्या मेरी इस बात के अंदर आप मेरे साथ एग्री करते हैं? हमारा तरीका जो हम जाहिर में निभाते हैं वो तो सिर्फ एक समझाने के लिए, एक डिसिप्लिन के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया था ताकि हम उसके बातीन के ऊपर गौर कर सके। The physical practices, the literal rites and ritual were given to us for the purpose of discipline and so we may pay attention to batin of it. But what happened after years and years and years? We forgot the batin. And whatever we are doing in Zahir has become a mechanical practice of our daily rituals. हमें जो ये दिया गया था वो हमें उसके बातीन की तरफ समझाने के लिए दिया गया था, लेकिन सालों साल की प्रैक्टिस के बाद हम उसके बातीन को भूल गए, उसकी तरफ तवज्जो देना भूल गए और हमने उसको बस समझा कि जो सामने है, जो नजर आता है, वही सब कुछ है। अगर यहाँ पर नाचीज एक भी अल्फाज आपको गलत कह रहा हो या अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो बेशक आप अपना हाथ उठाकर मुझे रोक सकते हैं। आए, चूंकि आज ये हमारे लेसन का आखिरी हिस्सा है, हम जहां से इसका आगाज किया था और वो था कि हमारा मजहब, हमारा तरीका बातीनी है, जाहिरी नहीं है।
we will go back to lesson number 1, where we had talked about and very well understood that our tariqa is a tariqa of the batin, not of a zahir. So what changed in last 8 weeks? Have we gone to the batin of our tariqa? Have we understood the batin of our dua, our ginan, our jamaat khana, our rites, our rituals? What has changed in last 8 weeks? Let's come and take step by step view of zahir compared to batin. And hope is, and the prayer is, and the wish is that end of today, inshallah, we would have a better understanding of what Imam wants from the Jamaat. Imam जमात से क्या चाहते हैं, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ताकि हम इमाम को फॉलो कर सके उसके फरमान के मुताबिक इंशाल्लाह। क्योंकि आपने एफर्ट लिया है, आपने टाइम दिया है और आप इल्म के आशिक हैं, मौला के आशिक हैं, तो हम ये काम मिलकर कर सकेंगे। It is not me, but you're doing, because you have taken the efforts. You have given your time, maybe your sleep, maybe your TV watching time, maybe your news watching time, maybe your walking time. You have given all that for the sake of the knowledge. As you can see on your screen, Zahir wa Batin, physical and abstract. There are two sides of a human being, a physical body and a soul. Physical body is temporary, soul is permanent. All things which are physical must comes to an end. All things of batin will remain. If that is the case, so how many batini understanding and kriya are we doing which is permanent compared to how many zahiri kriya we are doing which is temporary? If we understand, the physical must die, physical will go away, physical is not permanent. अगर हम इस बात को समझ गए कि जो जाहिर है वो कल खत्म होने वाला है, जाहिर कल चले जाने वाला है, जाहिर परमानेंट नहीं है, बातिन जो है, रूह जो है, वो परमानेंट है। तो हम कितना बातिन को पालते हैं और कितना जाहिर को पालते हैं, इसका कंपैरिजन होना चाहिए। एक परमानेंट है और एक टेम्पररी है। हमने टेम्पररी कितना किया कंपेयर टू परमानेंट कितना किया, उसका एक बैलेंस होना चाहिए। Let's talk about what is zahir and what is batin. How do we understand the batin of the zahir in front of us? I have written some of our dais and beads teaching of the zahir and the batin. What you see and what it is.
जो आपको नजर आता है और उसके पीछे जो हकीकत है, जो माने छुपे हुए हैं। और हम इमाम के एक फरमान को भी देखेंगे कि व्हाट इज फिजिकल और व्हाट इज रिटन इज फॉर ऑल, बट द बातिन इज फॉर आवर जमात। उसको हम देखते हैं आज। ये हमारे लिए एक छोटा सा टेस्ट भी होगा कि क्या इस बात को हमने समझा। So when we look at something in Zahir, does our mind goes into the batin of it? Do we even think of the batin of it? Do we understand the batin of it? Do we comprehend the batin of it? जो चीज हम उसको देखते हैं जाहिर को, क्या इसकी बातिन की तरफ हमारी तवज्जो जाती है? ये सवाल के साथ हम देखते हैं यहाँ पर। चीजें टाइम ऑफ शरीयत से, टाइम ऑफ तरीकत से, टाइम ऑफ हकीकत के अंदर बदलती रहती है। जाहिर सेम होता है, बातिन सेम होता है, लेकिन दिखने में वो बदलता रहता है। जिस तरह से हम रोजाना कपड़े बदलते हैं, लेकिन होते तो कपड़े ही हैं। हम रोजाना नए कपड़े पहनते हैं, कपड़े बदल लेते हैं हम, लेकिन अगर हम सोचे तो हम कपड़े ही पहने हुए हैं। आज हमने कभी एक कलर का कपड़ा पहना है, कभी दूसरे कलर का कपड़ा पहना है। उसका नाम कभी टी शर्ट हो सकता है, कभी शर्ट हो सकता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके, लेकिन कपड़े तो कपड़े ही है। और उसके पीछे हमारा जिस्म ही है। Let's come and look at it. In the time of Shariat, खाना काबा, the place of worship, वो जाहिर था और उसका बातिन जो था, यानी कि उसके अंदर जो रूह और नूर और जो हकीकत छुपाई गई थी, वो एक जिंदा लिविंग हाउस ऑफ गॉड था। और वो खुद अपने जमाने में रसूल, पैगंबर और नातिक होते थे। एक जाहिरी बिल्डिंग थी और एक बातिनी बिल्डिंग थी। एक जाहिरी हाउस ऑफ गॉड था, एक बातिनी हाउस ऑफ गॉड था। दौरे शरीयत में जाहिरी हाउस ऑफ गॉड, जाहिरी प्लेस ऑफ प्रेयर was खाना काबा। बातिनी house of Noor of Allah, house of prayer was Rasul sallallahu alaihi wasallam himself. As it says in Quran in Surah Ibrahim, जो मकाम इब्राहिम का है वही मकाम पर खड़े रहकर आप नमाज अदा किया करें। यानी कि वो फिजिकल जगह पर जहां पर इब्राहिम खड़ा हुआ है वहां नहीं, जहां पर इब्राहिम बातीन में खड़ा हुआ है वहां पर खड़े रहकर अब बातीन अपनी दुआ को प्रेजेंट करें अंदर, बातीन के अंदर। क्योंकि जाहिर जो है वो खाली सिखाने के लिए था, एक डिसिप्लिन के लिए था। बातीन उसका असल मकसद था। आए टाइम ऑफ तरीकत के अंदर। टाइम ऑफ तरीकत के अंदर मोमिनीन के घर भी प्लेस ऑफ प्रेयर्स है, लेकिन बातीन जो आला दर्जे के पीर और हुज्जत हुआ करते थे, उनका आलम शख्सी यानी कि बातीन खुदा का नूर और खुदा का घर, या हम कह सकते हैं दौरे तरीकत के अंदर इमाम का नूर और इमाम का घर हकीकत में उसके जिंदा चलते फिरते पीर
और हुज्जतान होते थे। जाहिर में एक घर होता था, किसका? मोमिनों का घर, क्योंकि अभी मजहब इतना नहीं फैला था कि जमात खाने बन जाए, मस्जिदें बन जाए। तो क्या करते थे कि मोमिनों के घरों को चुनकर उसको प्लेस ऑफ वर्शिप बनाते थे। लेकिन वो एक सिंबल होता था, उसका हकीकी नूरानी घर पीर अस खुद होते थे। आप सूरह यूसुफ के अंदर जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ए मूसा, तुम और तुम्हारे भाई मोमिनों के चंद घरों को लेकर उसको किबला बनाओ। और मूसा, you and your brother Harun take some of the homes of the Mu'minin and make them house of prayer, the Qibla. ये दौरे तरीकत की बात थी। आए दौरे हकीकत में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर जमाने में नाम बदलते रहते हैं, हकीकत नहीं बदलती है, नाम बदलते रहते हैं। फिर आया दौरे हकीकत। दौरे हकीकत में दरखाना जमात खाने का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, बहुत सारे जमात खाने बनाए गए। तो जाहिरी जमात खाना आपके गांव में भी होगा, आपके शहर में भी होगा, आपके मुल्क में भी होगा, लेकिन हकीकी जिंदा नूरानी घर इमाम खुद है, इमाम मुबीन है, इमाम जमान है। वो हकीकी जिंदा खुदा का घर है। और उसकी कापियास, उसकी समझ के लिए हमें एक 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 जमात खाना दिया गया, ताकि जब हम जमात खाने जाएं या जब हम जमात खाने का तस्वुर करें तो उसके साथ उसके जिंदा नूरानी घर का जो इमाम खुद है उसका तस्वुर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब हम जमात खाने जाते हैं तो ऐसा है जैसा खुदा के जिंदा नूरानी घर में जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में बात की कि कभी कभार हम भूल जाते हैं और जमात खाने के अंदर हम ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे अंदाजा होता है कि हमें कोई भी अंदाजा नहीं है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। We had talked about that last week, that sometimes we forget when we go to Jamaat Khana that where we are standing, and we forget that that is house of Imam, and Imam is living present in Jamaat Khana. We forget that part. Because why do we forget that part? Because we look at the Zahir, we forget the Batin. What we see is what we see, and we ignore what we should be seeing, which is the Batin of the Jamaat Khana, the living Imam, Imam Mubin, Imam Zaman. So you saw there are 3 levels. Every level there is a physical house and a spiritual house. Khana Kaaba, Rasul. House of Mu'minin, peace. Jamaat Khana, Imam. Physical and Batin. Physical and Hakikat. The truth. The living Jamaat Khana, the living house of prayers is Imam himself. Just like that, let's
do some more comparison for our understanding. Just like that, guidance is also physical and spiritual. जो हमें हिदायत मिलती है वो भी एक ज़ाहिरी तरीके से मिलती है, एक बातिनी तरीके से मिलती है. ज़ाहिरी, what is physical? The books. Books are physical, zahir, but quiet. This book cannot speak. I can see it, I can read it, but it cannot talk. Just like that, कुरान को कुरान सामित कहते हैं, खामोश कुरान, और इमाम को कुरान नातिक कहते हैं, बोलता हुआ कुरान. Just like that we have a book which is zahir, a physical book, but quiet book. The book cannot speak. So what is the batin of that? The Nur, the Imam is the batin of it, and he speaks. किताब खामोश है और उसका बातीन, उसके अंदर जो नूर छुपाया हुआ है वो बोलता हुआ है. You will find multiple ayat in Quran that I have sent down the book and the nur. A quiet, samit Quran and speaking nur, the Imam. Why together? Because book you can read, but you need a nur to guide you. Very important part of our learning. If that was not the case, then Allah would not have said again and again, I have sent down the book and the nur. Huzur sallallahu alaihi wasallam would not have said that I am leaving you with two things, a book and my progeny, a silent book and a speaking book. Imam would not have come over here and given us the farman if the quiet book was good enough. We had the Quran, we had the Ginan, then why do we need Imam? Because Imam is the speaking book, the Quran and Natik, who can guide us. He is the Nur which Allah speak of in the ayat in the Quran. Let's come to the one of Imam Moi's saying about the Quran. Very beautifully, someone shared with me last week, and I thought it was just perfect saying of Imam Moi's, how Quran came in existence. The book we are speaking of. Imam Mo'i says the Quran, the revelation, actually came in the batin, in the form of nur. In the form of nur. In the batin of Huzur sallallahu alaihi wasallam. Then it came the time to give that nur to the Jamaat. But he found Jamaat not at the level where they could understand.
he found their soul not elevated enough for them to understand. So what did he do? He could not have given the raw, purest nur and the form of the Quran to them. So he made it easier. He converted the nur into the words, easy words, allegories, examples, and gave to the Jamaat, the follower, the Muslim of that time. He brought it down to their level of understanding. So what does Imam do today? He gives us the Farman in the language and the level of our understanding. I want to talk about the level of understanding for a minute. There are over 1.2 billion Muslims. Does everyone understand the Quran in the same way? No. Does everyone have the nur to read the Quran? No. Does everyone have Imam to guide them and teach them the Quran? No. So what does that mean? That even the Quran and even the Ginan and even the Farman are at the 3 levels. And those 3 levels are the levels of the human mu'mineen's understanding. So when Imam is giving a Farman, there are 3 kind of people sitting there, listening to the same Farman. And when those 3 people come out of the Darbar, and if you ask them, what did Mullah Baba says today? The first one will say, Mullah Baba said, eat biryani and eat samosa. That's all he remembers. Out of all Farman, he remembered Mullah Baba said, eat biryani and eat samosa. Because he was just concerned with the Imam Zidar, not the Farman. And then he remembered Mullah Baba saying at the end, when I leave, play dandiya, eat biryani, eat samosa. Because that's how much concern he had, and that's it. The second will say that Imam gave so and so Farman, but it was so hard, I did not even understand what Imam was saying. Maybe it does not relate to me. Maybe that Farman was not for me. But then you'll find that third person. He will say that I understand Imam's Farman. Let me try to explain that to you. With the utmost humility, he will say, this is just my understanding of the Farman. Because remember, there were another 35,000 people there. They may have a different understanding of the Farman. Because in each Farman, there can be multiple understanding, multiple interpretation. जब इमाम फरमान फरमाते हैं तो 3 किस्म के लोग होते हैं. एक जिसको उस फरमान से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उनको याद होता है कि मौला है, मौला खुश थे और मौला ने कहा था कि डांडिया खेलना, बिरयानी खाना और समोसे खाना. दूसरे कहते हैं कि इमाम ने फरमान फरमाया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, शायद ये फरमान मेरे लिए नहीं था. तीसरा कहता है कि हाँ, इमाम ने जो फरमान फरमाया वो मेरी समझ में आया है, लेकिन मेरी समझ में जितना आया है
बस वो इतना मैं आपको बयान कर देता हूँ, क्योंकि बाकी के जो 30-35 हजार लोग थे, हो सकता है कि उनकी समझ में और कुछ आया हो। तो आपने देखा कि when we read Quran, when we read Ginan, when we read Farman, there is possibility that some read Farman as reading a newspaper. Second, will read the Farman and say, this does not concern me. And the third will say, I understand the batin of the Farman, and giving the opportunity, they will explain to others as well. तो इमाम मोइज फरमाते हैं कि चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ था वो नूर की सूरत में था, एब्स्ट्रैक्ट एंड रो था, लेकिन जब उन्होंने अपने फॉलोअर्स को देखा तो वो अलग-अलग दर्जात के थे और कोई भी उस दर्जे पर नजर नहीं आता था कि जो उसको उसके असल के साथ पहचान सके, देख सके, समझ सके। तो उन्होंने उसको अल्फाजों के अंदर, व्हाट डिड ही डू, उसको अल्फाजों के अंदर, वर्ड्स के अंदर, एलोगोरीज के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, मिसालों के अंदर लोगों के लिए बयान किया, ताकि सब अपने अपने दर्जे के मुताबिक उस कुरान को पढ़ सके और समझ सके। अच्छा, let's come forward. We still have more physical and spiritual ज़ाहिर और बातीन की अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो प्रेयर है, हमारी जो दुआ है, हमारी जो तस्बीहात है, हमारी जो गिरियावजारी है, उसके अंदर भी एक जाहिर है और एक बातीन है। उम्मीद ये है, the hope is that while we are reciting the Zahiri prayers, our mind and heart is in its batin, उसके मानी की तरफ, उसके बातीन की तरफ हमारा ध्यान है, ना कि मैकेनिकली हम ज़ाहिरी दुआ पढ़ते चले जा रहे हैं। So there are two parts to the prayers, just it was 2 parts to जमात खाना। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि जमात खाने के 2 हिस्से हैं, एक जाहिर है, एक बातिन है। इसी तरह हमारे दुआ के भी 2 हिस्से हैं, एक उसके अल्फाज है, उसका जाहिर है, एक उसके बातिन है, उसका नूर है। So physical action, our daily dua, इबादत, the essence of the dua, उसके अंदर जो इबादत है ना, वो दुआ का एसेंस है। अगर हम खाली दुआ पढ़ते हैं और उसको नहीं समझते हैं तो उसके अंदर कोई इबादत नहीं है। फिर आप किसी को भी दुआ सिखाते हैं, वो तोते की तरह पढ़ते चले जाएगा या एक मंकी की तरह एक्शन कर लेगा। नो, दैट इज नॉट आवर तरीका। आवर तरीका इज द तरीका ऑफ द बातीन। वो तो बातीन की तरफ समझ के लिए हमको एक जाहिर चीज दी गई थी। आप तमाम ने पिछले 2 सालों के अंदर कम से कम 1 या 2 मर्तबा दुआ के माने की जो सेशंस हुए थे उसको आपने सुना होगा कि क्या कह रहे हैं हम दुआ के अंदर। जब हम दुआ पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान और हमारा दिल कहां पर होना चाहिए? The essence of the dua is the इबादत। वो हकीकत में बंदगी है। खाली फिजिकल दुआ पढ़ लेना इबादत नहीं है। तो याद रखें,
Physical action is your daily dua. Ibadat is the essence of the dua. Remember that part. आए और हम आते हैं दुआ के अंदर. पहले हमने प्रेयर्स की बात की, अब हम दुआ की बात करते हैं. The dua are the words, ayat, surahs, etc. The meaning, the understanding is the batin of the dua. आपके पास अगर दुआ की किताब है आपके घर के अंदर, if you have the dua book in your home, open it on the very first page and read the farman. What does Mullah Baba said? Do not recite the dua without the understanding of the meaning of it. पहले पेज के ऊपर आपको मौला का फरमान मिलेगा कि दुआ को उसके मानी के साथ पढ़ो. ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं. I'm not speaking of translation of the dua. Recite the dua with the meaning, the understanding of the dua. ये फरमान है इमाम का कि आप हमेशा दुआ को मानी समझ कर पढ़ा करो. ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही है, तर्जमे की बात नहीं हो रही है. अक्सर लोग इतना कहने के बावजूद कहते हैं कि मुझे पूरा ट्रांसलेशन याद है. मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे वडीलों, respectfully, Imam, if he want us to learn the translation of the dua, he would have said so. But what did he say? Know the meaning of the dua. Imam knows his English very well. He knows the word translation. He did not use the word translation. He used the word meaning. So we need to understand the farman first, and then we need to learn and understand the meaning of the dua, so we can follow Imam's farman while we are reciting our daily dua. Principle number 1. This is Imam's farman. इमाम ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसमें से नंबर 1 जो प्रिंसिपल इमाम ने दिया है हमको, वो आपके सामने इस फरमान में है. What is the number 1 principle? Know the batin. Imam does not say know the zahir. Principle number 1, know the batin. This is the Farman of Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi. May our soul be sacrificed to this Imam. Jangbar, September 14, 1899. If you want to learn the Quran, become the students of those who know its real meaning. In this way, you will learn its real meaning. I want to stop here for a second. अगर हमको दुआ का ट्रांसलेशन सीखना है तो आप तो किताब में से पढ़ सकते हैं. You don't need ALWAAZ to come and teach you the translation of the dua. And I see they are putting so much time and effort in teaching the Jamaat the translation of the dua. What Imam wants and what are we doing? What Imam is saying and what are we understanding? We must pay attention to that. What does my Imam wants? What does my Imam is saying? Is this Farman can be any more clear? Let's read again.
और उर्दू में भी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूं। हमने अभी अभी 2 लाइनें पढ़ी जिसमें मौला फरमाते हैं, अगर आपको कुरान सीखना है, और याद रखें कि कुरान की आयत सूरह दुआ के अंदर है, अगर आपको दुआ सीखनी है, दुआ के मानी सीखनी है, कुरान जो दुआ के अंदर है वो सीखना है। If you want to learn the Quran, become a student of those who know its real meaning. अब उसके शागिर्द बने जो उसके हकीकी माने समझते हैं। In this way, you will learn its real meaning. इस तरह से आप कुरान की, सूरा की, आयत की, दुआ की हकीकी माने सीख सकेंगे। This फरमान cannot be more clear. ये फरमान इससे ज्यादा वाज़े तौर पर इमाम हमको नहीं दे सकते थे। आसान अल्फाजों में इमाम ने हमको समझाया। You are aware of many books of our faith, therefore you have not studied most of them. If you study such books, you will understand and no defect will remain within you. हमारे पास हमारे मजहब की बहुत किताबें हैं, लेकिन किसी वजह से हमने उसकी स्टडी नहीं की है। मुला फरमाते हैं कि अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो आप में कोई भी कमी कोताही ना होती। Your intellect will guarantee you that your faith is true if you read such works. अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं तो आप ही का दिल, आपका दिमाग आपको गारंटी देता कि हमारा मजहब सच्चा है। This you will come to know. आप इस बात का कंक्लूजन करते हैं। This was the number 1 principle of our tariqa. Let's come to second farman, because sometimes we say, okay, well, this was Maulana Sultan Muhammad Shah Sarwatullah's farman. There was a 100-year-old farman. It does not apply to me today. I'm a modern man. I'm living in America. I'm living in Europe. I'm living in a modern country. So let's come and read Mola Baba's farman. And not too far, 2005. 2005, Vancouver, Canada, Nur Maulana Shah Karimul Sani Hazir Imam Salawatullah Alayhi says, I would like my Jamaat to know how well I understand the pressure of living in an industrialized world, industrialized society, but expression of faith can be part of your everyday life so that dunya does not eliminate remembrance of deen. Keep in mind that life is determined. The only thing that is eternal is the soul of every individual. Attend Jamaat Khana regularly as you can. But keep in mind that you can also have an act of faith during the day. Take your tasbih when you have a few seconds of peace. Take your tasbih. Call the name of Allah. Call the name of the Prophet. Call the name of Imams. And I'm convinced that as days go by, you will find that these short moments of submission, recollection of one's faith will help you through your life, will bring you moments of happiness which are different from the material life. And I pray that you should be successful when you call your tasbih to find those moments of happiness. And those are the moments that each individual seek for himself. So seek those moments, individual moments.
they are not obligatory or compulsory. It is for each individual to seek out those moments of happiness and of thinking of other things in the material world in which you live. So why these two farman? The one farman about number one principle. And here Imam is drawing our attention that if you know the meaning and if you have read the books, if you understand your tariqah, because you understand the meaning of your tariqah, then let me tell you, Mola Baba is saying, how you can follow your tariqah every second of your life. Because Zahir practice, rites and ritual are there for your discipline, but the more important is that you live your life, every second of your life, in the remembrance of your tariqah. And you cannot do remembrance of your tariqah unless you understand the batin of your tariqah. Because the happiness, Mullah did not say you come to Jamaat Khana and you will be happy. The happiness comes with the daily and every minute practice of your tariqah. That is the batin, the essence of our tariqah. We do not start our religion from the doorstep of the Jamaat Khana, and we do not leave our tariqah at the doorstep of the Jamaat Khana. We live and breathe our tariqah, our religion. हम अपना मजहब जमात खाने की सीढ़ियों से शुरू नहीं करते हैं और जमात खाने की सीढ़ियों पर खत्म नहीं करते हैं. हमारा पूरा जिंदगी, हर सांस, हर मोमेंट, हर मिनट एक जिंदा तरीका है और उसके माने जाने बगैर हम इस तरीके को फॉलो नहीं कर सकते हैं. ये हमारा मजहब है.